Hello friends, how are you? In this video lecture of thermodynamics, today we will say what is a reversible process and irreversible process. पिछले लेक्चर में हमने देखा what is isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process. So today, difference between reversible process and irreversible process. So what is the reversible process? कोई भी प्रोसेस जहां पर स्टार्ट होती है उसी पॉइंट के ऊपर वो फिर से वापस लोड कराती है तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. सी अगर प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है ए टू बी, ए फॉरवर्ड रिएक्शन होगी एंड अगेन बी टू ए बैकवर्ड रिएक्शन होगी. यानी ए टू बी एंड अगेन बी टू ए स्टार्टिंग पॉइंट है. ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द एंड पॉइंट. प्रोसेस यहां पर स्टार्ट होती है, बी की तरफ जाती है और फिर बी से और ए की तरफ, यानी इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट जहां पर वो स्टार्ट हुई. सो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ए टू बी ए फॉरवर्ड प्रोसेस और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी एंड बी टू ए बैकवर्ड रिएक्शन है. Now, which force is responsible for this forward reaction? इसके लिए driving force is responsible. And driving force is responsible for forward reaction, forward process. And backward reaction के लिए वो opposing force. And in case of reversible process, two types of forces are working. That is forward, that is the driving force, and opposing force. Now, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज नेग्लिजिबल. यानी इसका पॉइंट नंबर 1 है. यहां पर ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स. Slightly greater than opposing force. And a difference between driving force and opposing force is negligible. So driving force is slightly, that is very slightly greater than that of what? Opposing force, isn't it? यानी इनका डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स थोड़ा ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली लेस, दैट इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन व्हाट? अपोजिंग फोर्स. नाउ इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ए टू बी, अगर अपोजिंग फोर्स है भी तो कितना होता है? दैट इज नेग्लिजिबल. यानी ड्राइविंग फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? अपोजिंग फोर्स. यहां पर इसका पॉइंट नंबर 1, यहां पर ड्राइविंग फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स. यानी अपोजिंग फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इट इज नियर अबाउट 0. यानी ड्राइविंग फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? अपोजिंग फोर्स नेग्लिजिबल. इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? अपोजिंग फोर्स. नाउ ये जो प्रोसेस रिवर्सिबल है, at every stage of this process there is a point of equilibrium. यानी in every stage वहां पर क्या होता है? there is a point of equilibrium. and we know that point of equilibrium का मतलब क्या होता है? जहां पर driving force is equal to what? opposing force. यानी at every stage, second difference है, at every stage there is a point of equilibrium where driving force is equal to what? opposing force. क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हर स्टेज पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा. ए इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां पर देयर इज नो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. बिकॉज system is what? Process is what? Irreversible. Opposing force is negligible. इसमें opposing force negligible है, so there is no point of equilibrium.
इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिंग फोर्स. नाउ थर्ड डिफरेंस, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, यानी दिस प्रोसेस नेवर गोज टू कंप्लीशन. ये प्रोसेस कभी पूरी नहीं होती, यानी इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. Infinite time is required to complete this process and never goes to completion, we can say. In case of irreversible process, this is very fast. This is very fast. And this always goes to completion. An irreversible process always goes to completion. Always goes to what? Completion. In case of reversible process, infinite time is required to complete that process. Infinite time लगता है complete होने के लिए, and never goes to completion. In case of irreversible process, there is no point of equilibrium, so this is very fast and always goes to completion. Now, next difference है, a reversible process है natural process नहीं होती. We have to arrange artificially. हमें artificially arrange करना पड़ता है by using external influence. यानी ये प्रोसेस जो है आर्टिफिशियल होती है. प्रोसेस इज व्हाट? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल प्रोसेस. और इरिवर्सिबल क्या होता है? दैट इज नेचुरल प्रोसेस. ये नेचुरल प्रोसेस होती है, इन्हें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नेचुरली ऑकर्स है, ये नेचुरल प्रोसेस है. नाउ टू स्टार्ट द रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो वी हैव टू अरेंज आर्टिफिशियली, यानी एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड. एंड रिमेंबर, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस, उस प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं. यानी प्रोसेस इज व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस इज व्हाट? नॉन स्पॉन्टेनियस. इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. And to start the irreversible process, external source is not required, external influence is not required. ये ऑटो प्रोसेस होती है, यानी ये प्रोसेस होती है दैट इज स्पॉन्टेनियस. दिस इज स्पॉन्टेनियस. जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस नेवर गोज टू कंप्लीशन. ए टू बी, बी टू ए, एक कंटिन्यूसली चलता रहता है. दैट इज ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए. यानी मैक्सिमम वर्क इज देयर इज अ मैक्सिमम वर्क, यानी मैक्सिमम वर्क. There is a maximum work. But in case of irreversible process, there is no maximum work. There is no maximum work. There is no maximum work. Example of reversible process, जो गार्डन में वाटरफॉल होता है, we have to arrange artificially. So example, waterfall in garden. एग्जाम्पल ऑफ दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो नेचुरल वाटरफॉल होता है, वो एग्जाम्पल किसका? इरिवर्सिबल प्रोसेस का. हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. दैट इज अबाउट नेचुरल वाटरफॉल. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इरिवर्सिबल प्रोसेस. In case of reversible process, that is water from garden. In a garden, we have to arrange artificially. External source is required to start that process. So this is about difference between what? Reversible process and irreversible process. Once again, in case of reversible process, driving force is slightly and infinitesimally greater than that of what? Opposing force. थोड़ा ज्यादा होता है opposing force के compare. In case of irreversible process, driving force is very much greater than that of what? Opposing force. यहाँ पर opposing force negligible होता है. It is nearly about zero. Second, at every stage there is a point of equilibrium, क्योंकि process reversible है, ये process irreversible है, यानी there is no point of equilibrium. Next difference, this process is very slow because A to B, B to A to B never goes to completion. Infinite time is required to complete this process. In case of irreversible process, this is very fast and always goes to completion. Next difference, ये artificial process है. We have to arrange artificially, and external source is required to arrange this process. That is why this is also known as that is non-spontaneous process. लेकिन irreversible process है, natural process है. This is spontaneous, a auto process है. External influence or source is not required to start this process. Example of this, waterfall from any garden, that is
एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल दैट इज नेचुरल वाटरफॉल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इरिवर्सिबल प्रोसेस. फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, irreversible process. Flow of water, flow of water from high altitude to low altitude, example of what, irreversible process. So if any doubt, you can put your doubt in comment box. Definitely I will get back to you. Thank you.